Okay. Uh, okay. So we'll start in a few minutes. We'll start in a few minutes. And till then, let's have audio checks. If I'm audible, if you can hear me, please shoot up a hi or yes in the comment section. If I'm audible, if you can hear me, shoot up a hi or yes in a comment section in the comment section. Okay, so great. We are audible. We'll start in a few minutes. In a minute or two. We'll start in a minute or two. Okay, so let us start. Hello and welcome everyone to the Tech Week 2020 organized by ACM CEC and DSC CGC. I am Ravi Rana, DSC lead Chandigarh Group of Colleges, and today we have Kapish Goyal with us, who is going to give you an expert talk on Internet of Things. So I welcome Kapish. I am audible. Uh, yes, to me you're audible. Let's have some checks. If Kapish is audible, please shoot up the comment section with yes or hi. Yes, we have confirmation. Kapish, you are audible. So over to you, Kapish. Thank you. Hello everyone. My name is Kapish and I am currently pursuing my bachelor's in the field of IT. So today I am going to share my information regarding IoT and try my I will try my best to make the concepts understandable. So here is a short video. So the topics that will be covered today are introduction to IoT, what is an IoT, how it can change the living way of a society, key features, advantages and disadvantages, types of sensors, real life example, bundle circuit, introduction to breadboard, how to find resistance value, how data is transferred to Arduino, functions available to code for Arduino, basic code telling and some basic concepts. So now here is the short video about IoT. We have all heard of the term Internet of Things or IoT. As it is becoming an increasingly growing topic of conversation, let's try and understand what exactly is Internet of Things. You may be watching this video on your PC or phone and it is connected to the internet. Internet on your device could be connected through broadband or Wi-Fi. Simply put, this is the concept of basically connecting any device with an on-off switch to the internet. There is people-to-people connection, there is people-to-machine connection, and then we have machine-to-machine connection. Internet of Things or IoT refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, collecting and sharing data. As the price of processors and wireless networks go down, technology is becoming cheap and penetration of smartphones are skyrocketing. It has become possible to turn anything into a part of the Internet of Things. It is like adding a level of digital intelligence to the devices that would allow them to communicate with a human being or with another machine. And that's not all.
According to reports, there would be more than 26 billion connected devices by 2020. That's a lot of connections, isn't it? But why on earth do we need so many connected devices? Let's take another example. Mike has to go for a morning meeting. His alarm clock wakes him up at 7 a.m. and notifies the coffee maker to start brewing coffee. When he goes to take a shower, the geyser was already notified and warm water was available for Mike, saving his time. Mike's car is connected to his calendar and tells him to take the best route to avoid traffic. If the traffic is heavy, his car might send a text to another party notifying them that Mike will be late. The Internet of Things can be applied to transportation, production, smart cities, and many other projects, saving us energy, time, and reducing waste. We are yet to completely understand how Internet of Things will impact our lives. What would be the opportunities and challenges that will come with it? For now, the best thing that we can do is to educate ourselves about Internet of Things because IoT Storm is here to stay and the new rule of the future is going to be anything that can be connected will be connected. So, what idea do Hello, you have Kapish. about? Hello, Yes, bro. hello, Kapish. Your voice is breaking. Your voice is breaking. Can you adjust your microphone? The video was okay, and but your voice is breaking. Is it audible now? To me, yes. To me, it's audible. Uh, please ping in the chat if my voice is audible or not. Please ping in the chat if the issue is now resolved. And yes, it's audible now. What idea do you have about IoT? Ping in the chat that what idea do you have? Please share your views in the comment section. Kapish, can you repeat yourself? Your voice cracked a bit there also. I think it's a mic issue in my, I guess. What idea do you have about IoT? And share your views in the comment section. So now move on. Uh, the IoT is IoT is a network of physical objects that are connected to the internet, allowing them to send and exchange data. It is a global infrastructure for the information society and enabling advanced services by interconnecting things based on existing and evolving technologies. So, anyone want to share an example? Please bring in the chat. Please bring in the chat if you have any example. So, the examples are connected appliances, smart home security systems, wearable health monitors, smart factory equipment, wireless trackers, and biometric sensors. In this game, you all have to detect the IoT devices and mention the same in the chat. Hello, Kapish. Kapish, your voice is. Sometimes it comes and goes. I think it's a mic issue. So, Mankishwar. Yes, I am please. audible now. Yes, you're now you're audible. Sometimes it comes and goes while you are speaking or while you're asking something. So please check on it. Okay, bro. So now let's play a game. In this game, you all have to detect IoT devices and mention the same in the chat box.
So the correct answers are smartwatch and home automation system. Moving next, we are introducing to the setup of environment. For IoT, we generally use Arduino IDE. This is the best environment for working with Arduino for IoT and stuff. Arduino IDE is even compatible for machine learning and artificial intelligence. Now, steps to install. First, visit arduino.cc. Second, select the preferable version. Third, let's wait till the installation. So now, the key features of IoT. There are some features of IoT are given below. First, artificial intelligence. Second, connectivity. Third, sensors. Fourth, engagement, active engagement. And fifth, small devices. And some advantages of IoT are improves customer engagement, technology optimization, reduced waste, enhanced data collection. Hello, Kapish. Kapish, sorry to interrupt you again about this issue, but it's the issue is persisting. So, can you try to change your mic or earphones? So Hello, can I change my laptop? yes. Reconnect, please. Please reconnect. So sorry for the disturbance, everyone. We'll start the session again soon. Please don't go anywhere. Till then, let me share with you the recap of the tech week. So far, what we have learned. The day one started with Vue.js. Kanav gave an introduction and helped you make a basic Hello World application in Vue.js. And yesterday we had Ekant Bagri who gave us an insight on AI, cryptography, and blockchain. Uh, so uh, dark web also. And today we have Kapish here. Kapish is right now changing his laptop to clear this issue. I'm again so sorry for this. And talking about the future, we have Vanshika for Firebase and Gaurav for Flutter. Stay tuned with us. We have a whole amazing week planned for you, and Kapish will be back. Kapish will be back soon. Uh, so so far, if you have any doubts, anything, you can share it in the comment box, and Kapish will take them up when he reconnects. If you want your doubt clear, if you want a pathway to IoT, just mention it in the comment box, and Kapish will take it up when he gets back. So we have Kapish back. Kapish, am I audible to you? Yes, bro. I am audible now. To me, yes, you're audible. If Kapish is audible, please type in the comment box. Just hurry up. Please type in the comment box if Kapish is audible to you. Please type in the comment box if Kapish is audible to you. Yes, Kapish, you are now audible. So now we have challenges of IoT.
In the field of IoT, there are many challenges faced by the programmer or a developer. Some of the major issues are security, privacy, complexity, flexibility, and compliance. These are the major factors which programmer or a developer facing through when they are develop their project. Here are a list of some IoT companies in India. That is Stellabs Technologies, Infosys Synapse, Roadmap IT Solutions, Wipro, Airtel, HCL Technologies, and Cisco. Some pay scale for IoT professionals in different companies are mentioned below. In IoT, the most important hardware in IoT might be its sensors. Some of the sensors are mentioned below. Some are accelerometers, magnetometers, gyroscopes, acoustic sensors, pressure, humidity, microflows, light, image, temperature. And in this slide, I will show some pictorial representation of sensors, that is accelerometer, humidity, sound, PIR, ultrasonic sensor, and piezoelectronic. So now we will be discussing about features of IoT, features of smart home automation system. Basically, it is a system that uses computers or mobile devices to control basic home functions and features automatically through the internet from anywhere around the world. It is meant to save electric power and human energy. It is used for monitoring, controlling, and transferring information to other devices through the internet. Automation has three major parts: hardware, software, and communication protocol. IoT helping us in replacing the chef, butler, nanny, security guard, gardener, and repairman. So today we will cover that what a circuit is. A circuit is a path between two or more points along which an electric current can be carried. In this diagram, if the length of the pipe is smaller, then the voltage is high. And in the second diagram, if the length of the pipe is bigger, then the voltage is less. And in this slide, we will see the relationship between water flow and current. Thicker the pipe, more will be the flow of current, and the thinner the pipe, lesser will be the flow of current. In this, we are discussing about resistance. Basically, resistance resists the flow of current. It is measured in ohms. So now, how a circuit works. The wires in a circuit carry the electric current through various parts of system. A battery or a generator produces voltage. It is complete circuit with continuity flow of current. An open circuit. An open circuit is one where the continuity has been broken by an interruption in the path for current to flow. Introduction to breadboard. Breadboard is a rectangular plastic board with a bunch of tiny holes in it. These holes let you easily insert electronic components to prototype an electronic circuit, such as one with a battery, switch, resistor, and an LED or a sensor. So now, how to use a resistor? For using a resistor, we are having a Ohm's law, which says that if the current through a conductor is always directly proportional to the voltage. In this slide, we are calculating the current of resistance 100 ohms, and the voltage is given 5 volt. So our today's task will be to know that how is data being transferred to Arduino. To know about that,
we should have the knowledge about serial communication. Serial communication. It is used for communication between the Arduino board and a computer or other devices. All Arduino boards have at least one serial port and some have several. There are, there are many functions available in serial communication. Some of are available: begin, print, println, read, read bytes until, read string, and read string until. So the first is serial.available. It is used to get the number of bytes from the serial port, the data that already arrived and stored in the serial receive buffer. So in this we have a program in which two inbuilt functions are given, that is setup and loop. हम सेटअप में बिगिन यूज serial डॉट बिगिन यूज किए हैं ताकि हम जो कंप्यूटर और आर्डिनो का स्पीड है जो मैच कर सके। हम लूप में वो कंडीशंस लगाते हैं जो हमने टास्क परफॉर्म करवा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डाटा चेक करना है कि वो मतलब डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने कंडीशन लगाई है इफ serial डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0। serial डॉट अवेलेबल है वो चेक करेगा कि जो डाटा है वो मतलब वो अवेलेबल है या नहीं। ग्रेटर देन 0 इसलिए लगाया ताकि हम चेक करें कि वो सीरियल अगर तो वो डाटा अवेलेबल है तब तो वो लूप चल जाएगी, वरना लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब जब लूप चल रही है तो उसमें serial डॉट रीड लगाया जो कि डाटा रीड करेगा कि जो डाटा है वो क्या आ रहा है, और उसको हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में डाल दिया एंड देन उसको प्रिंट कर दिया serial डॉट println में। सेकंड फंक्शन है हमारे पास serial डॉट begin। It sets the data rate in bits per second for serial data transmission. For communication with serial monitor, make sure to use one of the baud rates listed in the menu at the bottom right corner of the screen. An optional second argument configures the data, parity, and stop bits. The default is 8-bit. No parity, 1 stop bit. Its syntax is serial dot begin and the speed of the monitor. And the third function is serial dot print. From the name of the function, we print the data. We print the data which we are receiving. अगर हमारे पास डाटा इंटीजर में आ रहा है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर वो डाटा हमारे पास फ्लोट में आ रहा है तो उसके वो सिर्फ टू डेसिमल प्लेसेस तक की प्रिंट करेगा। अगर हमारे पास डाटा प्रेजेंट है कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग में तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। serial डॉट println ये serial डॉट प्रिंट की तरह ही काम करेगा, बट इसमें जो भी डाटा आ रहा है वो जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा। एंड serial डॉट रीड क्या करेगा, जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको रीड करेगा। मतलब इसमें एग्जांपल दे रखी है कि कैसे हम जो डाटा है वो रीड करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। कंडीशन है इफ serial डॉट अवेलेबल जैसे कि बताया था कि अपना जो डाटा है वो चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो लूप चल जाएगी, और लूप चलने के बाद जो serial डॉट रीड है वो डाटा रीड करेगा कि डाटा जो है वो एनालॉग में आ रहा है या डिजिटल में आ रहा है। और अगर वो मतलब उसको फिर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं ताकि हम चेक कर पाए कि वो जो डाटा है वो क्या आ रहा है हमारे पास। serial डॉट रीड बाइट्स, इसके नाम से पता लग रहा है कि हम बाइट्स को रीड करेंगे। सो इट रीड्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द serial port into a buffer. The function terminates if the determined length has been read or it times out. See serial dot set timeout। हम serial dot set timeout भी लगा सकते हैं अगर हमने चेक करना हो कि वो कितने देर के बाद हम उसको टाइम आउट कर देंगे कि जो वैल्यू है वो उसके बाद रीड नहीं करेगी।
तो serial dot read bytes बेसिकली रिटर्न करता है नंबर ऑफ करेक्टर्स प्लेस्ड इन द बफर। अगर वैल्यू 0 है तो मतलब उसमें कोई डाटा प्रेजेंट ही नहीं है। इसका सिंटैक्स है serial dot read bytes बफर एंड लेंथ। बफर है वो द बफर टू स्टोर द बाइट्स इन allowed data types और ऑफ कैरे और बाइट। एंड द लेंथ में हम डाटा की लेंथ देंगे जो कि इंटीजर टाइप में होगी। So anyone for queries, and if someone has doubt, please ping in the chat box. Kapish, we have a doubt from Dhaninder that what if the value is more than 0? अगर वैल्यू 0 से ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब कि हमारे पास जो डाटा है वो अवेलेबल है और हम उस पर काम कर सकते हैं, मतलब उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर वैल्यू 0 है तो उसमें मतलब कोई डाटा जो है हमारे पास कोई डाटा नहीं आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 कर दिया तो हमारे पास कोई डाटा आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल वैल्यूज की, तो उसमें 0 एंड 1 आता है। अगर 1 हमारे पास आ रहा है तो उसमें 1 का मतलब कि हमारे पास डाटा है वो अवेलेबल है। जो डाटा हम जो जिस डाटा पे काम करना है वो हमारे पास रिसीव हो रहा है। So now moving, so next is a challenge. In this challenge, you have to count a variable with each. When write an Arduino program that starts with an integer 0, print it to the serial monitor and increments the integer. मतलब जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है ना, हमने काउंट 0 ले लिया और हमने उसको इंक्रीज करते जाना है, इंक्रीमेंट करते जाना उसको। सो अगर किसी के पास सॉल्यूशन है, मतलब यू हैव ओनली 1 minute टू राइट द कोड एंड पिंग इन द चैट बॉक्स। Bro, if anyone answer. Kapish, go on. So here is the solution in which we have taken an global variable int of integer data type and counter sets to 0. So basically in the loop we print the हमने सबसे पहले काउंटर को प्रिंट कर दिया कि उसकी सबसे पहले वैल्यू कौन सी थी। तो उसमें सबसे पहले 0 थी तो पहले 0 प्रिंट हो जाएगी। देन हमने काउंटर को इंक्रीज किया एंड देन काउंटर को इंक्रीज करेंगे तो वो लूप दोबारा टर्मिनेट होगी, मतलब दोबारा चलेगी। और ये लूप है जो मतलब बिना रुक के चलेगी, मतलब कहीं इस पे मतलब एंड नहीं होगा। तो हमने डिले लगाया। डिले का मतलब है कि डिले में वैल्यू दे रखी है कि कितनी देर बाद वो वैल्यू है जो प्रिंट करता जाएगा। अब 500 का इसमें मीनिंग है कि जो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000। सो 500 इज इक्वल्स टू 5 मिलीसेकेंड। So now moving to the practical part. Let me open it. Bro, give me 1 minute.
सो हम प्रैक्टिकल पार्ट है जो हम की टिंकर कैड पे करेंगे। इसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो हमारा है ब्लिंकिंग ऑफ एलईडीज, जिसमें हम एलईडीज को ब्लिंक करवाएंगे कॉन्टिन्यूटी में। मतलब तो सबसे पहले पहली एलईडी चलेगी, उसके बाद सेकंड चलेगी एंड देन थर्ड। लेट इट बी you can see the LEDs are glowing. So we are moving to its core part, that is we are declaring the pins from which pin we are taking an input. For example हमारे पास जो पहली एलईडी है रेड, उसको हमने 11 पिन से ज्वाइन करा है और उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि जो एलईडी है वो हमेशा आउटपुट देती है, हम उसको इनपुट नहीं दे सकते। एंड सेकंड जो एलईडी है वो 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है एंड जो थर्ड है वो 9 से, और उसको आगे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस देगी प्रोवाइड की है रेजिस्टेंस मेजर करके, एंड देन हमने उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। और इसका कोड ये है कि जो डिजिटल राइट है वो वैल्यूज मतलब राइट करने के लिए होता है कि जिसमें 11 पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और अगर वैल्यू हाई है, वैल्यू हाई मीन्स कि अगर वैल्यू हाई होगी तो वो ग्लो करेगी। देन अगर वैल्यू लो है तो वो जो लाइट है वो ग्लो करना बंद कर देगी। उसके बाद हमने सेकेंड एलईडी उसके बाद डिले लगाया है 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड के बाद जो फर्स्ट एलईडी है वो ग्लो करना बंद कर देगी एंड देन सेकेंड एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हमने सेम कोड लिखा है पर पिन नंबर डिफरेंट दिए है। जो जिस पिन से वो कनेक्टेड है उसको हमने कनेक्ट किया है, उसको हमने लिखा है और हाई उसको हाई कर दिया। सबसे पहले वो हाई होगा, फिर वो बंद भी होगा 1 सेकेंड के बाद। जो डिले है वो डिले देने के डिले से पता लग रहा है कि वो डिले दे रहा है, पर कितने का दे रहा है 1 सेकेंड का। सो उसके बाद 1 सेकेंड के बाद वो जो ग्लो हुई है सेकेंड लाइट वो बंद हो जाएगी एंड देन उसके बाद थर्ड जो एलईडी है ग्रीन कलर की वो सेम चलेगी, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। एंड देन ये लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर होने की वजह से बार बार ग्लो करती जाएगी इन्फिनिट टाइम्स। तो अगर हम इसकी मतलब वर्किंग देखें तो इन्फिनिट टाइम्स ये ग्लो कर रही है। सेकेंड देन थर्ड देन मूविंग फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड। ये तो मतलब बेसिक प्रोजेक्ट था आईओटी में, जो कि मतलब बेसिक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है बच्चों से। और मेरे पास सेकंड प्रोजेक्ट है, लेट मी ओपन इट। सर्किट इसमें हमने पीआईआर सेंसर यूज किया है जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को। सो लेट द मिनिमाइज स्क्रीन। मैंने इसमें ये एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह बनाया गया, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर पीआईआर सेंसर में डिटेक्ट हो गया तो वो क्या करेगा, पीजो इलेक्ट्रिक है जो कि साउंड प्रोवाइड करता है। अगर पीआईआर सेंसर में अगर वो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो गया तो वो जो पीजो इलेक्ट्रिक है वो साउंड देना शुरू कर देगा। इस लेट मी रन दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी जो ये पॉइंट है ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लगा लो और अगर इसके अंदर है सो जैसे कि आपने देखा कि अगर वो इस एरिया मतलब पीआईआर सेंसर के एरिया में आया तो वो पीजो इलेक्ट्रिक है वो ऑन हो गया एंड जो ग्रीन लाइट थी वो भी ऑन हो गई थी। लेट मी
जैसे वो ऑब्जेक्ट बाहर आया तो रेड लाइट ऑन हो गई। तो इसे हम अपने मतलब घर पे भी मतलब अपने घर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे बैठे हैं और हमें नहीं पता कि मतलब पीछे से कोई भी आ जाता है, तो हमें नहीं पता लगता, उसको इसको यूज करके हम अपना मतलब एक प्रोजेक्ट मतलब सर्किट बना सकते हैं, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आया तो हमारे पास वो अलार्म सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो इसका बेसिकली यही है। और इसकी कोडिंग जो सर्किट है वो हमें एक तो लो कॉस्ट में पड़ गया है। इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। जो मतलब पीजो इलेक्ट्रिक है वो मतलब ऑलमोस्ट 40 या 50 का मिल जाता है मतलब मार्केट से। और जो एलईडीज हैं, एलईडीज तो मतलब इजीली मिल जाएंगे, अवेलेबल घर पे भी अवेलेबल होती हैं। तो पीआईआर सेंसर की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब लाइक इतनी भी नहीं, मतलब 200 से 300। तो ये हम लो कॉस्ट में अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। और आईओटी का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक तो सिस्टम जो है वो स्मॉलर हो जाता है, और एक जो कॉस्ट पड़ती है उसकी लो पड़ती है। तो इसमें भी हमने सेम किया है। और हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया सेंसर वैल्यू, जो कि डिटेक्ट करेगा। अगर कोई पर्सन डिटेक्ट हो गया तो सेंसर जो वैल्यू है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो उसके लिए हमने सेंसर वैल्यू ली है। तो हमने पिन मोड दिए हैं कि जो एलईडीज हैं, एलईडीज की जो 12 है, अगर पीआईआर की कनेक्शन देखें तो पहले हमें दिखा रहे सिग्नल, देन पावर, देन ग्राउंड। तो इसका जो सिग्नल में है उसको हम इनपुट लेंगे, क्योंकि इसे हम ऑब्जेक्ट के इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमने 12 नंबर से कनेक्ट किया है और हमने वैल्यू दे दी है इनपुट। और अगर एलईडीज का देखें तो एलईडीज एक तो 6 से कनेक्टेड है और एक 8 से कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमने सेम दिया है 8 एंड 6। तो आउटपुट शो करेगा, तो इसमें हमने आउटपुट दे दिया है। और सीरियल डॉट बिगिन जो कि स्पीड मैच करने के लिए है। और अगर वर्किंग है तो वर्किंग क्या है, जो कि हमने डिजिटल रेट मतलब 12 नंबर से पीआई सेंसर से हमने कोई भी वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करेंगे। अगर वो वैल्यू डिटेक्ट करें, हमने मतलब सेंसर वैल्यू में डाल दिया कि अगर कोई पर्सन मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो डिटेक्ट होता है तो पीआईआर वैल्यू इंक्रीज कर देगा। डिजिटल है तो 0 एंड 1 में चलेगा। अगर वैल्यू 0 है तब तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, तो तब ये वाला सिस्टम चलेगा। अगर उसने सेंसर मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया तो 1 देगा। अगर 1 चलेगा तो 1 में क्या होगा, इफ सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो एक तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर काम ऑन हो जाएगा, जिसकी टोन है, टोन में क्या दिया 10 पिन नंबर, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक है। और 100 है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद हमने डिजिटल राइट है, वो हमने उसके लाइट्स के लिए लगाया कि जो अगर पीजो इलेक्ट्रिक ऑन होता है तो ग्रीन लाइट भी ऑन होती है। तो ग्रीन लाइट है जो हमारी वो 6 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 6 को हाई कर दिया, मतलब जो ग्रीन एलईडी है वो ऑन हो जाएगी और जो टोन है वो शुरू हो जाएगी। और जो रेड एलईडी है उसको बंद भी करना है, तो हमने बंद करने के लिए डिजिटल राइट 8 नंबर पिन से कनेक्टेड था, तो हमने 8 को लो कर दिया। एंड हम मैसेज पास कर रहे हैं सीरियल डॉट प्रिंटलन सेंसर एक्टिवेटेड। और अगर हम देखें तो ये लेट मी स्टार्ट द कोड। अगर हम पर्सन ने डायरेक्ट किया अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो यहाँ पे वैल्यू आई सेंसर एक्टिवेटेड एंड ग्रीन लाइट ऑन हो गई थी। और जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो ऑन हो गया था। ऑन होने से हमें पता लग गया कि जो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पीआईआर सेंसर के एरिया में आ चुका है। और इसलिए हम इसको ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर सकते हैं, मतलब लो कॉस्ट में पड़ जाता है।
तो अगर हमने अगर सेंसर वैल्यू उसने डिटेक्ट नहीं किया, अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ना हुआ, तो वो क्या करेगा, रेड लाइट ऑन कर देगा, 8 नंबर पिन है जो, और जो ग्रीन लाइट है उसको लो कर देगा, मतलब जो ग्रीन लाइट है वो काम करना बंद कर देगी। एंड अगर अभी देख लो कि मतलब लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, मतलब वो एरिया से बाहर है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ऑब्जेक्ट डीएक्टिवेटेड, और ये बार बार इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि ये लूप में है। तो ये सेकंड बेसिक प्रोजेक्ट था जो कि हम बना सकते हैं, मतलब इजीली मार्केट से अवेलेबल है, मतलब सारे जो पार्ट्स हैं इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे पास तो इस टाइम हार्डवेयर है नहीं है, तो मैं मतलब टिंकर कैड यूज कर रहा हूँ टू शो, मतलब शो करने के लिए। और थर्ड प्रोजेक्ट है मेरा टू शो, मतलब शो करने के लिए। क्या हुआ? हेलो ब्रो। It was just a reverb, I guess. You go on. ओके। एंड देन थर्ड और एंड मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है, वो भी बेसिक है। उसमें मैंने पियानो बनाया है, मतलब बटन यूज किए हैं, बटन यूज करके हम पियानो, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने फन के लिए बनाया है ताकि बच्चों को मतलब इंटरेक्शन मतलब अच्छे से हो सके, अगर हम पियानो बना सकते हैं घर पे बैठ के। तो उसका प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये रहा। आई थिंक नेट इज स्लो, दैट्स इट। इसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज किया है, एंड देन बटन यूज किए हैं, बटन के साथ हमने कनेक्शन बनाया है, हर एक बटन के साथ हमने हर एक पिन दी है कोडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल हमने हर एक बटन से इनपुट लेनी है, अगर कोई भी मतलब लाइक कोई भी पर्सन है, अगर वो बटन प्रेस करता है, मतलब बटन प्रेस करने पे उसको इनपुट मिलेगी, देन उसके लिए हमने उनसे इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट दे दिया सेकंड नंबर पिन, और जितने भी हमने पिन यूज किए हैं, मतलब नंबर ऑफ बटन हैं वो 6 हैं, और मैंने सेकंड नंबर पिन से यूज किया है, तो नंबर ऑफ पिन्स डिक्लेयर कर दिए हैं। और जो पिन मोड 13 है, वो हमारे पास इस पीजो इलेक्ट्रिक है, कि जो वो पीजो इलेक्ट्रिक है वो आउटपुट देगा, तो इसलिए 13 से मैंने 13 नंबर पिन से आउटपुट दे दिया है। और अगर हमने फिर उसके बाद अगर इसकी वर्किंग देखे, तो अगर वो बटन मतलब जो पर्सन है वो प्रेस कर रहा है, तो वो प्रेस करने पे उसके पास डिजिटल जो बटन के पास आर्डिनो के पास डिजिटल वैल्यूज आएंगे। डिजिटल वैल्यूज जो है हमने वो स्टोर कर दिए किसी भी मतलब वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल्स ले लिए B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। सो नाउ इफ मतलब जो पर्सन है, अगर वो बटन मतलब पहले बटन को प्रेस करते हैं, बटन प्रेस होने पे क्या होगा, उसके पास सेंसर की वैल्यू है वो 1 आएगी। अगर वो 1 आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, जो टोन है वो 30 नंबर जो पीजो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि अगर बटन दबाने पे हमने पीजो इलेक्ट्रिक ऑन करना है, तो 30 नंबर है जो हमारे पास आउटपुट देगा। तो 13 मिनट से उसकी फ्रिक्वेंसी सेट की है 4000, एंड देन कितने टाइम के लिए, 1 मिली सेकेंड। तो अगर हमारे पास सेकंड बटन प्रेस होता है, तो उसकी मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज की है ताकि वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करे, एंड अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने पे डिले लगाया है 10 सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का ही लगाया है। तो अगर हम इसको रन कर रहे हैं, तो करने पर हमें इनपुट हमारा internet is initializing. I think the network is slow. I think the network is slow. It's turned back locally.
I think there is some issue in the network, so let it open. Run the program. I think there is some network issue. Let me reconnect. Bro. Okay, go ahead. Uh, so now, any queries regarding the project or any questions? If anybody has some doubt and any queries, please ping in the chat. Bro, if there is any queries, then ping it on the screen. You can check in the comment section. There are many queries in the comment section. बेसिकली अगर आपने IoT करनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मतलब बेसिक से अगर शुरू करना है तो आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एडवांस जाना तो रास्पबेरी पाई पे काम कर सकते हो जिसमें आप पाइथन यूज़ करोगे। और सी प्लस प्लस और सी में भी मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट्स कंडीशन या लूपिंग से हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बेसिक प्रोजेक्ट्स बताए हैं वो लूपिंग या कंडीशन से चल गए। मतलब अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका कोड देखें तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इससे सिर्फ इफ कंडीशन से काम हो रहा है। तो इफ कंडीशन से मैंने जो है पियानो बना दी है। पियानो है जो वर्किंग कर रहा है। और आई थिंक नेटवर्क इज बैक। लेट्स डू द तो जैसे आपने देखा कि मतलब बटन प्रेस करने पे वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर जो भी पर्सन है अगर वो बटन दबाता है तो हर एक बटन पे अलग फ्रिक्वेंसी की वॉइस निकलती है। तो इसका पियानो में बस यही है कि मतलब एक अलग अलग साउंड की हमने फ्रिक्वेंसी दे के हमने साउंड प्रोड्यूस की है। एनी क्वेश्चन? I'm a civil engineer. You can ask the question. Yeah, IoT for automated cars. IoT इसमें IoT का मतलब अगर प्रोजेक्ट है तो हम क्या रिमोट कंट्रोल कार भी। Kapish, your voice is lost. Am I audible? Hello, I am audible. Yes, now you're audible. You're telling about IoT for automated cars. ऑटोमेटेड कार्स IoT यूज हो सकते हैं। IoT बेसिकली ऑटोमेशन के लिए है कि मतलब लाइक बिना मतलब पर्सन टू पर्सन अट्रैक्शन नहीं होता ना तो पर्सन तो मोबाइल हमने फिजिकल करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं रिमोट कंट्रोल कार जो कि हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम I have let me open the video. YouTube. It will show you something better. Yeah, this is.
Subscribe to Indian Life Hacker and press on this ghanta so that you never miss any video from Indian Life Hacker. Hi, this is Indian Life BLE board. You're going to make a mobile control car by using a Arduino Romeo BLE board. You can check the details of the board in the description. I hope you guys like this video. I can't breathe, the embers have gone dry. I don't need. जैसे कि आपने देखा उसने अपने मोबाइल के साथ अपना रिमोट कंट्रोल कार ऑपरेट कर रहा है, तो उसके लिए हमने मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करने से हम अपने जो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल पिन्स? तो डिजिटल पिन्स आर्डिनो उनो में डिजिटल पिन्स होते हैं 14 एंड एनालॉग पिन्स होती हैं 7. Can anyone tell this? Or can you give a session for blockchain? Any other queries? So that's it for today. Thank you, and now now over to Ravi. Kapish, we have one more question, that in which year I can also be able to build these? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो सी लैंग्वेज सीखने के बाद आप उसको कर सकते हो. उसके लिए आपको सेकंड मतलब सी प्लस प्लस सीखने की जरूरत नहीं है, आप सी में भी प्रोग्राम कोड कर सकते हो. Okay, so Anurag has said, can you give a session for blockchain? Anurag, we'll arrange a different speaker for blockchain, and if we have any update regarding this session, you will be notified via your class groups or via your CR. So thank you, Kapish, for being here, for giving this very informative session. I hope the people attending this session got something from it. So thank you, Kapish, for being with us, and thank you everyone for tuning in. Stay tuned. We will be back tomorrow. Thank you, everyone.